ओके गुड इवनिंग पिलामाने आज आमे गोटे नुआ चैप्टर आरंभ करबा जाना होची स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स होची गोटे एमती चैप्टर जोटे तुमको डेटा गुडा को दिया हिथिबो तुमको खाली ताको एनालाइज करबार अछि कि से डेटा तुमको कोन कम्युनिकेट करिया पई चाहूची हला ताले आमे आरंभ करबा इंट्रोडक्शन नो हला मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हला द डिस्पर्शन और स्कैटर in the data is measured on the basis of observation and the types of measure of central tendency used here. There are following measures of dispersion. Me गोटे first measure होची हमारा range. Second होची quartile deviation. Then mean deviation. Then standard deviation. इठरा में कोटा पढ़िबा range पढ़िया mean deviation पढ़िबा standard deviation पढ़िबा आगे हमें हला आगे हमें डिटेल रे कोन कोन सब था सब डिस्कस करबा एबे आसीबा रेंज रे रेंज कौन था सपोज तमरो डेटा जो दिया है सेट रे मैक्सिमम स्कोर करची गोटे लोक माने गोटे पिला आउट ऑफ 80 79 और मिनिमम गोटे पिला स्कोर करची आउट ऑफ 80 33 हला ताले रेंज कौन आबो रेंज विल बी मैक्सिमम माइनस मिनिमम विल बी इक्वल टू रेंज देखो इट इज लिखा है इन केस ऑफ बैट्समैन ए in case of batsman A, range is 117 minus 0, which is 117. कहीं कि ना maximum केते से करथिला maximum गोटे 0 करथिला और गोटे 117 करथिला. Thus the range of a series is maximum value minus minimum value. Hello, maximum minus minimum. Hello. So the range of a data gives us a rough idea of variability or scatter, but does not tell about the dispersion. माने dispersion हमको mainly को दीटा जिनस कहबे dispersion हमको mainly कहबे deviation deviation कहबो आउ किंतु रेंज टा एते भलो कि हमको बते पारे से हमको खाली वेरिएबिलिटी नले स्कैटर ऊपर बता चलो मीन डेविएशन अगर हमें पढ़िया मीन कोन मीन माने एवरेज हला एवरेज माने जेते सब ऑब्जर्वेशन अछि सबको ऐड करबो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हला mean हला average. So recall the deviation of an object x from a fixed value of a is the difference x minus a. सेमिति mean deviation माने तमरो mean deviation माने कि तमरो x minus mean है जीवा बुझवाला. In order to find the dispersion of a value of x from a central value a, we find the deviations about a. An absolute measure of dispersion is the mean of these deviations. To find the mean, we must obtain the sum of the deviations, but we know that the measure of central tendency lies between maximum and minimum, which is the range, lies between maximum and minimum values of the set observation. माने हमर maximum minimum range भितरे ही हमर central tendency lie करे हला. Thus the sum of deviation may vanish. Moreover, the sum of deviation from mean is 0. So mean deviation is sum of deviation divided by number of observation. एटा होची तारो फॉर्मूला हमको मन रखिया अछि. Mean deviation is number of deviation divided by number of observation. Thus finding the mean of deviations about the mean is not use of any. माने ए जो हमारा ए फॉर्मूलाटा अछि एटा एते mean of deviation हमको एते यूज रे आसेनी. Remember that in finding a suitable measure of dispersion we require a distance of each value from a central tendency or a fixed number a. Recall that absolute value of the difference of the two numbers gives the distance between the number when represented at the number line. ताले एठो हमको जाना पड़ला कि to find the measure of dispersion from a fixed number a, we may need to take the mean of absolute value of the deviation from the central value. ताले
आम जो ऊपर पढ़िले मीन ऑफ डेविएशन सेटा हमको इंपॉर्टेंट है किंतु मीन डेविएशन सम ऑफ व्हिच इज दिस which is sum of absolute value of deviation from A upon total number of observations. This is known as mean deviation. देखो mean deviation may not note mean deviation may not be obtained from any measure of central tendency. However, mean deviation from mean and median are commonly used in statistical studies. Now let us learn how to calculate mean deviation about mean and mean deviation about median of various type. देखो मीन डेविएशन हमको कामरे आसे किंतु मीन ऑफ डेविएशन हमको कामरे आसे नहीं याकि मीन ऑफ डेविएशन will result in 0 किंतु मीन डेविएशन will give us some value which is mean deviation ହେଲା ताले हमें दीटा टाइप रो मीन डेविएशन बाहर करू डेविएशन बाहर करू गोटे मीन डेविएशन आउडा मीडियन डेविएशन ହେଲା ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा माने डेटा ता हमरो ग्रुप हेनी लेट n observation be x1 x2 x3 x upon like up to xn the following steps eta hochi step amara mean deviation bahar kariya pai chatta how total amara step 1 step 2 step 3 and step 4 step 1 re kon kariya step 1 re we will calculate the measure of central tendency about which we are to find the mean deviation let it be a find the deviation of each xi from a i.e. x1 minus a, x2 minus a, x3 minus a. This is the deviation. Then find the absolute values of the deviation. That is, drop the minus sign if it is there. Absolute value. माने हमें सबरो minus sign हटा देबा mod नहीं जीवा सबरो. हला. Find the mean of the absolute values of the deviation. This mean is the mean deviation. हला. So हमें अगर बाहर करना x यारा sum divided by total observation. This will be equal to mean deviation. And this mean deviation will also be equal to this, where this is the mean or average. है ना सो एट्रे आमे यदि मीडियन नहीं की करिबु ताले m is median हमको मीडियन एज अ सेंट्रल वैल्यू नेबार अछि है ना इन दिस चैप्टर वी शैल यूज सिंबल m टू डिनोट मीडियन है ना एटा ठीक अछि रन फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन हमको अबाउट द मीन बाहर करबे से अबाउट यदि मीन डेविएशन से बतई छी ताले अबाउट समथिंग से स्टेट करिबो इट विल स्टेट in the question ताले by default आपे mean नहीं की जानी so 6 7 10 12 13 4 8 और 12 अगर ये यार हमें mean बाहर करो mean is denoted by x तो mean बाहर कर लो total कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 total observation 8 तो 8 आस्ता then we'll add which will be equal to 72 by which is also equal to 9 है ना so हमारा x bar is equals to 9 भरना so the deviation of the respective observation हमें बे कौन करिबा हमें deviation बाहर करिबा 6 minus 9 which is xi minus x bar हैला र हमें सम करिबा in the end तो step 1 है गला mean बाहर कर लो step 2 है गला deviation बाहर कर लो step 3 है गला absolute value नहीं गलो देखो step 1 रे हमारा ये सब value बाहरला एबे एठो absolute value ना माने modulus नहीं मॉड्यूलस नहीं गले एब्सोल्यूट वैल्यू बाहरला तापरे पे हमें मीन डेविएशन बाहर करबा जत्ते सब हमरो डेविएशन बाहरला we will add that divided by total number of observation we will get our mean deviation with respect to x bar instead of carrying out steps every time we can only carry on calculation step by step माने हमें डायरेक्ट भी बाहर कर परबा यदि हमें चारटा स्टेप करी करी हमें बाय हार्ट कर दबा ताले हमें क्वेश्चन ता डायरेक्ट सॉल्व कर परबा हला नेक्स्ट mean deviation of a grouped data माने तुमको डेटा दिया है which is already grouped माने कि 75 रू 100 भीतर केतेटा पिला स्कोर करले पिला लेबो 63 this is all grouped data नले आगरे कोन होथिला फर्स्ट पिला 23 मार्क्स स्कोर कला सेकंड पिला 73 इमती करके each
पिलार आम पाखे डेटा थिला एबे कोन आमे ग्रुप कर देले गुटे ग्रुप भीतर कर देले व्हिच इज 75 टू 100 बुझला सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा सो डेटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू वेज गोटे होची फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गोटे होची कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट माने कि अलग अलग रहबो 10 रु 12 देन फॉर एग्जांपल देखो अगर हमें पढ़िबा डिस्क्रीट कोन अछि हेलो discrete frequency distribution let the given data consist of n distinct values जोटा कि दिया है occurring with frequencies this data can be represented in tabular form as given below and this is called discrete frequency distribution देखो x1 केते थरा आसला x1 हमारा आसला f1 times x2 f2 times इम्ति आसे कि this is our discrete frequency distribution हला मीन डेविएशन अबाउट द मीन एटा में बाहर कर परबा एटा फार्मूला टिके चेंज हे जिवो खाली f गुटे एक्स्ट्रा आसी देखो this will be the mean mean रे कोन हो जिवो 1 by n summation of xi multiplied by frequency with respect to that सेटा हमर हे जिवो जस्ट बाकी सब सेम रहबो बुझि पालो thus we find the deviations of the observation right एटा भी देखो खाली f टा मल्टीप्लाई हबो आगे पछरे और तळे टोटल फ्रीक्वेंसी आसी जिवो सेटा कोन आसीला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट इज टोटल फ्रीक्वेंसी हल मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन मीडियन रे कोन हबो मीडियन रे भी सेम रहबो किंतु मीडियन रे हमें काकना मीडियन नोचो so we will keep n so these are all important formulas okay you have to learn all these formulas यदि learn कर दबो को भी क्वेश्चन तमे इजीली सॉल्व करी पारिबा हला एटा important and this formula is also important at the back of chapter there are all important formulas given okay find the mean deviation about the mean of the following data एटा हमको दिया है discrete frequency देखो discrete frequency distribution ର form रे दिया है हला let us make a table 15.1 of this माने हमें टेबल बनेले सब बेला में टेबल रे काम करबा टेबल रे काम कले हमको इजी रहइबो कि हमें कोन करछु जानिबा पाए फर्स्ट हमें जो ए टेबल टा दिया था को वर्टिकली लिख देलो जस्ट वर्टिकली लिखि देलो हला देन xi fi हमको जाना अछि मल्टीप्लाई कर लो xi fi तापरे xi minus x bar हमें बाहर कर लो x bar what is x bar in this case x bar will be 1 by n summation of fi xi रा सम हमें कोन बाहर कर लो fi xi रा सम दिया थी 300 300 डिवाइडेड बाय टोटल केते अछि टोटल हमारा हला टोटल 40 अछि so this is total frequency this is also equal to total frequency change करता है item x bar is equal to summation of fi xi divided by set of fi hala so this will be equal to 7.5 this will be our mean okay now mean deviation का formula में जान लो this is the mean deviation formula which is 1 upon summation of fi summation of fi xi minus x hala this will be our formula जो ये दिया है so this is how we'll find mean deviation okay so next को जब continuous frequency distribution what is continuous frequency distribution continuous frequency distribution माने जो अगर हमें फर्स्ट एग्जांपल देख ले कि गुटे पिला हमें रेंज डिसाइड कर दलो 0 रु 10 10 रु 20 20 रु 30 भीतर 30 रु 40 एंड सो देखा मार्क्स ऑफ सेट नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 0 रु 10 भीतर केतेटा 12 टा स्टूडेंट 10 रु 20 भीतर 18 टा 20 रु 30 27 टा एंती है कि we'll have this is a continuous we'll have all the data in between 0 to 60 where 60 is highest and 0 is lowest okay so एमती हमें बाहर करिवो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तमे जानि जिवो जदी तमरो मार्क्स ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी रे 10
ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆସିବ 10 ରୁ 20 କି 20 ରୁ 30 କି 30 ରୁ 40 ଏଠାରେ ବି ଆମେ ମିନ୍ ଡେଭିଏସନ୍ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ସେ ଟେବଲରେ କ'ଣ କରିଛି। ତମେ ଯଦି ଟେବଲଟା ମନେ ରଖିଦେଲ ନା, ଦେଖ ये जो टेबलटा ଅଛି ଏଇଟା ଏ ଟପ୍ ପାର୍ଟଟା ଯଦି ମନେ ରଖିଦେଲ ତାହେଲେ ତମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କି ଯଦି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ସେମିତି ଯଦି ତମେ ଏଇଟା ବାହାର କଲ ତାହେଲେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ମାର୍କ୍ସ ଅବଟେନ୍ କେତେଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ଦୁଇଟା। ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ? ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିନ୍ସ 10 ରୁ 20 ଭିତରେ ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ? ଆମେ ଏଇଟା ବାହାର କଲେ 15। ସେମିତି 20 ରୁ 30 ଭିତରେ 25, 30 ରୁ 40 ଭିତରେ 35, ସୋ ଅନ୍। ତାହେଲେ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ହେଲା। ଆମେ ବାହାର କରିବା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ extra ହେଲା। देन fi xi हमें बाहर कर देलु। मिड पॉइंट विल बी द आवर xi, ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज फ्रीक्वेंसी। सो fi xi बाहर कर देलु। देन सेम 8 रू बाकी हमें सब सेम कलु। जस्ट this is midpoint which is this, which is extra to find the xi, okay. To find xi and continuous we need to find mid point ହେଲା। सेमती ही हमें सेम फार्मूला लगे कि हमें बाहर कर दो। Now, shortcut formula for calculating mean deviation about the mean. We can avoid the tedious calculation of computing x bar, which is mean, by the following step deviation method. Recall that in this method we take assumed mean which is in the middle or just close to it data. Then the deviation of the observation are taken from the assumed mean. There is nothing to be shifted from the origin from 0. Assume that mean number lies as it. assumed mean गोटे mean टा assume कर देलु 60 ताले ये जो हमें मिड पॉइंट बाहर कर देलु सेटा बाहर କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ताले assumed mean हमें कौन डालू? assumed mean will be for this हमें a45 कॉलू ताले this x bar is equals to assumed 45 bar। ताले इठरे हमें कौन कर देलु देखा ये ऊपर है हमें बाहर कॉलू मीन पूरा 8 मीन बाहर था 8 रो मीन 8 रो बाहरला therefore x bar किंतु हमें assume कर देलु किंतु गोटे मीन अछि which is equal to 45 45 कहीं ना 10 रो 80 टोटल ता मझे गोटे 45 रैंडम बने गलो हेलो। देन जो हमारा आंसर टा बाहरिला जो आंसर टा हमार बाहरिला सेटा को हमें 8 रे पकेलु where a is assumed and h is 10 from the following table। हमें बाहर कर लो h 10 अच्छी which is 10 to 20 भीतर कितना पहला लास्ट हेला ताले हमें a and then 0 by 40 0 का हेला fi di 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 is equals to this गोटे di टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर लो जोटा हेला हेला di बोल के कर दो। here we added di then we found out xi এটা হেলা আমার fi di divided by n multiplied by h then we'll find out that this is equal 45 that we assume is equal to mean। तापर हमें नॉर्मल मीन डेविएशन फार्मूला पका देले और आंसर 10 बारी होला इजी। दिस इज आल्सो नोन एज स्टेप डेविएशन हैला। स्टेप डेविएशन मेथड रे हमें x को फाइंड आउट करो ओके कंप्यूट x जो इटी आसला एटा हमें x जोटा xi अछि ना सेटा हमें बाहर कर दरकार पड़लानी हमें सीधा di बाहर कर लो di रो x बार व्हिच इज एवरेज बाहर कर लो तापर सीधा ए फार्मूला को आसिलो हैला। So this is how we do these questions, okay। So here exercise देखिए तब ଏବେ ଆସିଲା ଆମେ variance ଆଉ standard deviation। variance को हमें denote केमती करू recall that while calculating mean deviation about the mean or medium
The absolute values of the deviation were taken. The absolute values were taken to give the meaning to the mean deviation. जदि आमे माइनस टा नहीं जीवु ताले एमती कोठी तमे सुनिଛ कि -15 people died in this car crash हेबनी 15 people ताले आमे सब बेले पॉजिटिव रे डील करियो recall that अच्छा इठी हेगला otherwise the deviation may cancel among themselves जीरो हो जीवो ऊपर आमे देखिलु mean of deviation किंतु जीरो हेगला. Another way to overcome the difficulty which arose due to the signs of the deviation is to take squares of the deviation. Obviously, these squares of deviation are non-negative. Squares of non-negative रहेगा. Hello. Therefore, let x1, x2, x3 to xn be n number of observation and x bar will be their mean. Then x minus x bar whole square plus x2 minus x bar whole square up to xn minus x bar whole square is equal to 8 summation summation from xi जोड़ा हमने इसको simplify कर लो. If the sum is 0 then each x minus x bar has to be 0. This implies there is no dispersion at all and the observation is equal to the mean x bar. Okay, so if this summation is very small, this indicates that the observation are close to the mean. Therefore, there is low degree of dispersion. On the other hand, if the sum is large, then the dispersion is very large. So we can say that this is a reasonable indicator of the degree of dispersion or scatter. And this thing is known as, okay, आगे पढ़िए. Let us take the set A of 6 observation and the mean of this and this. हम एटा बाहर कर ले ताले हमारा summation up to एटा करे 1750 वाला. Let us take another observation y dash हमें सेट बाहर कर ले 30 वाला. एटा x dash हमारा बाहर थिला 30 थिला. एटा हमारा 2480. ताले एटा हमको जाना पड़ची कि this one has smaller deviation and this one has larger deviation. काय के ना यार this the sum of the squares of the deviation is very high. Hello. So this is also denoted by phi square is also known as variance. Hello. Then hello. એટલે કઈ છે this number i.e. means of the squares of the deviation is called variance and it is denoted by, so this when we take this is known as variance. Hello. How this is known as standard deviation. So if we square variance we'll get if we square standard deviation we'll get variance. Okay, standard deviation. In case in the calculation of variance देखो ये variance का एक formula আছে माने रखता है important formula. ताले variance रो हमको जाना पड़े कि सेटा यदि variance बड़ा अछि ता माने scattering अधिक अछि. The variance कम अछि ताले scattering भी कम अछि. बुझि पारला. Similarly एबे हमें आसीबो standard deviation. Standard deviation हमें एबे just मुकाइतली standard deviation is the root of variance. Variance root कर दा ताले हमर standard deviation आसीबो. So similarly standard deviation which is denoted by this is the root of is equals to root of variance. यदि मैं variance बाहर कर दूं standard deviation तार root लेगले बाहर जो है ना. Next example हमें करबा 6 एटा हमारा data set दिया है. These are the data sets. एटरो हमको बाहर करबार अछि variance of the following data. सबटो आगे हमें x I ले लो then we'll calculate it di xi minus 14 by 2. सेटार हमें di बाहर कर लो di बाहरी वाला. तापरे डेरिवेशन फ्रॉम मीन रो एटा माइनस कर लो ताले हमर एटा बाहरला हला मीन दिया है
तापरे हमें एक्स आई यार एटा बात कलो एबे गोटे एक्स्ट्रा टेबल बनिबो which is xi minus x bar whole square which is also हला यार सम जदि हमें कर दबा ताले वेरिएंस आ जाओ एटा सब हमें स्क्वायर करके ऐड कर देलो हला स्क्वायर करके जदि ऐड कलु ताले हमर वेरिएंस केते बारला वेरिएंस हमर बारला 33 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर दे केते दिया छै टोटल नंबर हमर दिया छै 2 3 4 5 6 7 8 9 10 330 डिवाइड एटा ताले स्क्वायर हबो दिस विल बी स्क्वायर लिखना दिए बट दिस विल बी स्क्वायर दिस इज स्क्वायर 330 divided by 10 is equals to 33 এটা আমার স্কয়ার হয়ে গেল তাহলে এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যদি বাহার করে রয়েছে আর আন্ডার রুট নিয়ে যাবে আন্ডার রুট 33 is equals to স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হলা সিগমা the standard deviation of discrete frequency is given as discrete जहां हमारो discrete हमें करथिलु गोटे fi ऐड करथिलु सेम एटे गोटे fi मल्टीप्लाई हे जो दैट्स ऑल नथिंग हाउ n is equals to fi हला ओके ताले हमें नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट अछि हमरो find the variance and the standard deviation of the following data ये डेटा रा हमको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर करे अछि दिस इज ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रा एग्जांपल हेलो सो एटा कोन करिया xi एटी दिया अछि टेबल आको अगर वर्टिकल कर दा वर्टिकल कर देला तापरे xi दिया अछि तले fi xi हमें बाहर करिया 12 देन x बार हमें बाहर करि परबा व्हाट इज x बार इज टोटल डेटा को ऐड करिवा डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 30 टोटल ऐड कलु फ्रीक्वेंसी 30 टू डिवाइड कलु हमर बाहरिला 14 14 मारला देखो 18 और एटा 14 बाहरिला तो 14 रा हमें माइनस कलु xi fi सब माइनस कलु तापरे आरो स्क्वायर नेलु स्क्वायर नेकी ऐड कलु ताले एटा हमर बाहरला गामा स्क्वायर हला गामा स्क्वायर बाहरला दिस इज गामा स्क्वायर हाउ एटा जदि हमें फ्रीक्वेंसी ऐड कलु ताले हमर एटा असली गामा स्क्वायर बाहरला एटा हला गामा स्क्वायर बाय 5 so here gamma square is equals to एडी वाला 1374 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर केते थिला 30 थिला एड देछि 30 डिवाइड बाय 30 कर देले हमर गामा स्क्वायर व्हिच इज वेरिएंस बाय वाला स्टैंडर्ड डेविएशन कोन हो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा स्क्वायर अंडर रूट कर देले ताले 45.8 रो अंडर रूट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इनते हमें बाहर करबा खाली सिंपल बेसिक इच्छा हमको करबा नै जहां हमें आगरो करि आस्तले सेति की करबा खाली हमें एठो स्क्वायर गोटे एक्स्ट्रा नै दिबा सेटा हमर वेरिएंस हे दिबा तार अंडर रूट नै गला हमर स्टैंडर्ड डेविएशन पढे आसी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ने भी एटा हमें कोन करथिलु मिड पॉइंट बाहर कर देलु एटा हमें मिड पॉइंट बाहर करके हमें बाहर कर देखो मिड पॉइंट रे हमर xi बाहरला फ्रीक्वेंसी अपन दे देछि मिड पॉइंट xi जगह रे हमें मिड पॉइंट बाहर कलु तापर fi xi बाहर कलु तापर xi माइनस x बार होल स्क्वायर बाहर कलु तापर एटा फ्रीक्वेंसी दिस डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू गामा स्क्वायर हेलो एटा हमर कोन अछि कि एटा हमर खाली डेटा दिया है हमको से डेटा रे फार्मूला पकेबार अछि बाय मेकिंग टेबल यदि हमको टेबल बनेबा आसी वाला टेबल रो हेडिंग मेन हमर काम अछि टेबल रो हेडिंग मने रखिया अछि हला टेबल रो हेडिंग यदि हमें मने रखि देलु ताले हमर काम है तापर हमको कोन है बाहर करबे अछि यदि हेडिंग रे हमर x बार अछि x बार हमको जाना नै किंतु x बार हमें बाहर कर परबा ना एटा को x समेशन ऑफ xi बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी x बार आसी वाला ऐड करके हमें इजीली बाहर कर परबा व्हाट इज xi ताले जदि हमको ए टेबल रो हेडिंग माने अछि
ताले हमें इजीली स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन गुड़ाक सॉल्व कर पाए हला। सो एबे तमरा जे गोल अछि, योर गोल विल बी टू learn all the table headings. ओके, ये लर्न कर देला ताले तुम्हारा most questions will be easily solvable हला। So next, हमें जो next to shortcut method to find variance and standard deviation हला। Shortcut method to find variation, standard deviation. Sometimes the value of xi in a discrete distribution on midpoints, xi of different classes in a continuous distribution are large. Hello, मैंने बहुत बड़ा था. So the calculation of mean and variance become very tedious and time consuming. So जिमती हमें सेट shortcut method बाहर कर दिले, उटे d add करके समती एठे भी उटे d नाले एठे हमें ताको हमें y बोली कहते y बोली कहते मतलब y समती बाहर करिया जिमती ऊपर हमें shortcut method mean deviation रे d बाहर कर दिले. एट जिमती हमें d बाहर कर दिले देखा सिमती एठे हमें y बाहर. Similarly, we'll take y. Similarly, we'll take yi. है ना y नहीं बेटा चले हमें y रो स्क्वायर कर लो मल्टीप्लाई कर लो एटा एफ वाई आई बाहर कर लो 105 डिवाइडेड बाय n which is equal to 50 चले हमारा आंसर वैल्यू 50 105 okay है ना and we'll apply the same formulas we'll find out. Okay, so this is some exercises you'll do. Okay, these were some exercises, so you'll do now analysis of frequency distribution. In the earlier section, we have studied about some types of measures of dispersion, जोटा कि standard deviation, mean deviation, range, ने जोटा में measure बाहर करते हैं ना. The mean deviation and standard deviation have the same units in which the data are given. Data रो जो unit थे वो mean और standard deviation रो same unit रहे. Similarly, range रो भी same unit रहे. है ना. Wherever we want to compare the variability of two sets with the same mean, which are measured in different units, we do not merely calculate the measures of the dispersion, but we require such measures in the independence of the unit. Such variability is independent is called coefficient of variation or CV. माने हमको यदि comparison करिबार अछि ओ दुटा जिंस भितर ताले तार यूनिट हटावा को पड़बे. फॉर एग्जांपल तम पाखरे गोटे लीटर क्षीर अछि और गोटे किलो सुना अछि तमे ताको कंपेयर कर परिबो लीटर हो किलोग्राम को नहीं कर परिबोनी बुझ पारलो से ताले हमको ताको गोटे सेम जिंस को आनिबार अछि सेम वेरिएबल को ताले हम जानि छ लीटर को केमती कन्वर्ट करंती किलोग्राम में कन्वर्ट कर दबा देन विल कंपेयर कि कोटा अधिक अछि कोटा कम अछि बुझ पारलो ताले हमको तारो यूनिट रिमूव करिबार अछि. यूनिट केमती रिमूव करबो विद द यूज ऑफ सीवी. सीवी इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रो फार्मूला अछि गामा बाय x which is mean multiplied by 100. Okay, so this is how you find the coefficient of variation where gamma sigma eta this x bar are the standard deviation and mean of the data. Okay,
So comparison of two frequency distribution with same mean. First table, second table. Data को compare करिवार अछि. Mean is same. How will we do that? सबुठ अगर आम CV of first distribution बाहर करवा, CV of second distribution बाहर करवा, एटा दिया है इक्वल. तो CV will be equal. So the values will be compared on the basis of standard deviation of 1, standard deviation of 2. Hello. For example, here you example देखिए. Two plants A and B of a factory. Okay, two plants A and B of a factory show following results about the number of workers and the wages paid to them. Okay, गोटे फैक्ट्री ए अच्छी गोटे फैक्ट्री बी अच्छी. ए पाखे 5000 अच्छा, बी पाखे नंबर ऑफ वर्कर्स 6000 अच्छा. एवरेज मंथली वेजेस ऑफ ए अच्छी 2500, यहाँ भी 2500. वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस कौन है? दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ 9. ताले स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन है? 9 यार 10. Then which plant A or B has greater variability in the individual wages? केमती बाहर करवा? With the help of CV. ताले मैं जानची CV कौन? CV is equals to CV is equals to gamma divided by bar multiplied by 100. तो हमें अगर गामा बाहर कर ले, गामा इज व्हाट 9 x बार हमें इधर बाहर कर पाएगा. एवरेज मंथली सैलरी दिया है तो 9 divided by 2500 multiplied by 100, so which is 9 by 25, which is also equal to 0.36. Hello. So first plant A part अच्छी 0.36, B part कौन अच्छी? B part हमारा 9 जगह 10 अच्छी, 10 divided by 25 अच्छी, which is also equal to 0.40. पहले B रो अधिका अच्छी. देखो, since B has greater variability, माने B हमारा अधिका अच्छी, therefore plant with a greater variability will be equal to, माने तारो wages भी अधिका थिबा हो सेम. ताले मेनली जदी दीटा अलग अलग जगह कंपैरिजन करबे छै, जैसे कला कंपेयर कोई भी क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में भी देखो व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन, तारो कंपैरिजन दे देछि. देखो कोफिशिएंट CV देछि, स्टैंडर्ड डेविएशन देछि 21 आ ओटर 16. वेरी इजी क्वेश्चन. जदी हमको CV रो फार्मूला माने अछि हम इजी देखो. हमरो स्टैटिस्टिक्स रे खाली फार्मूलाज इंपोर्टेंट अछि, देन रेस्ट तुमको क्वेश्चन रे ही से सब दे दबो. यदि फार्मूला माने अछि ताले तुम स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन इजीली कर दो. ओके, नेक्स्ट हमें करिया ए क्वेश्चन टा. CV1 दिया है 60, CV2 दिया है 70. हला यारो गामा 1 गामा 2, गामा 1 कहते दिया है 21, यारो 16. तो CV is equals to gamma by mean. मतलब mean is equals to gamma divided by CV. 21 divided by 60 is equals to mean, first mean, multiplied by 100. Then second, first mean कौन आसला? हमारा equal to 35 आसला. Second mean CV gamma divided by CV into 100, which is also equal to the second mean. Second mean कितने आसला? 22.85. Hit दिया है 35 22.85. So this is how we'll find the means of the two different distribution. Similarly a question करिवा. Similarly हमारा ए एक्सरसाइज टा अछि, एक्सरसाइज टा करि परिवा. ओके, व्हेयर इज एक्सरसाइज? एक्सरसाइज करिवा मिसलेनियस एग्जांपल जे तमारा इच्छा होची यू कैन डू, देन विल डू द रिवीजन. ओके, हमें कौन बाहर कर रहे? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन 1 रेंज, एटा में पढ़ी लेनी. मीन डेविएशन पढ़ ले, वेरिएंस पढ़ ले, स्टैंडर्ड डेविएशन. हला आर द मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ओके, रेंज रो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू कले रेंज बाहर जीवो. एटा में देखिता. हला मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप डेटा. यदि ग्रुप है ही नहीं ताले मीन डेविएशन रो फार्मूला 8 दिया है. These are two. This is when median is taken.
This is when mean is taken. Okay, median को m रे represent करते mean को x bar. Mean deviation of group data. Group data रे कौन गोटे extra से frequency आसे. ताले सब उठे हमें frequency multiply करेगा. एटा frequency multiply आला. एटा frequency and capital N is equals to this. Okay, ready. Important. Then variance of variance and standard deviation of ungroup data. Ungroup data कौन square कर देबो एटा को. This part is squared here 1 upon n. Similarly 1 upon n एटार अंडर रूट वेरिएंस खाली अंडर रूट नहीं गले हमर स्टैंडर्ड डेविएशन आसी हैला. सो एटा को मैं मार्क कर देबा. एटा मन रख, एटा मन रख, एटा मन रख, एटा मन रख हैला. ऊपर एटा देन दिस जोड़ा मार्क करते यू हैव टू रिमेंबर दैट. वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी रे कोन आला खाली गोटे f मल्टीप्लाई. This here also. Okay, this is n. Fine. Variance and standard deviation of continuous frequency. Same continuous frequency रे खाली गोटे n टा पळा आसला. That's all. ଆଉ କିଛି କଲାନି. ଗୋଟେ fi ଆସିଗଲା. ଆଉ କିଛି ଆମକୁ एक्स्ट्रा ଦେଖିବାର ନାହିଁ ହେଲା. ଖାଲି ଗୋଟେ xi ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ xi ଯଦି ଆମର कंटीन्यूअस रे ଅଛି which is equal to mid point of that continuous ହେଲା. जो mid point ଆମେ बाहर कले ताले मेन हमको कोन मने रखियार अछि. मेन हमको देखो एट लिखि दउछि. मेन ए चैप्टर रे फार्मूला एंड टेबल हेडिंग्स hello. First is formula, second is which will take only like formulas are around 10 formulas. और टेबल हेडिंग चारिटा टेबल हेडिंग हला. बाकी तार सब डेरिवेटिव सब सेटु बाहर. शॉर्टकट मेथड टू फाइंड डेविएशन. शॉर्टकट मेथड रे कोन हमें कलु. शॉर्टकट मेथड रे फर्स्ट मीन डेविएशन रे कोन थिला हमर डी आई थिला. एटा खाली वाई आई थिला. दैट्स ऑल. कोफिशिएंट एटा वेरी इंपोर्टेंट. बहुत क्वेश्चन एटा आसी परिबे. राइट रे मार्क कर दो हला. दिस इज इंपोर्टेंट. CV coefficient of variance which is also coefficient of variation which is also equal to gamma by average multiplied by 100. So it हमर सरला statistics chapter. Statistics chapter जहाँ वो तुमको बतेली. Just try to remember that this is important insights रे हमको खाली गोटे फॉर्मूला लर्न करिवार अछि आ गोटे टेबल राइटिंग. यदि ए दिटा हमें लर्न कर देलु any question of statistics can be solved easily. Any question, whether it's JEE-Main, JEE advanced level, any question can be solved very easily. So आजिर class एटी सारिबा. Next हमें पढ़िबा probability हला because both of them are related. आउ तमे practice करू था आउ भल की फॉर्मूला रिवाइज करो. जहाँ ट्रिक्स बताउची ताको मन रे रखी करी do your thing. Okay, so एबे हमें क्लास टाइम एंड करिबा. प्रैक्टिस करता. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE-Main. ओके, थैंक यू.